Okay, Atul bhai, we can start in 1 minute. Yes, Atul bhai. હા, રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના મદ્રાસ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન આક્રમકતાને નાબૂદ કરવાની કૂંચીના વક્તા ગોમથીજી, નિર્મલાજી અને અવનીશજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત આપણે વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરીશું. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આજની સભાની કાર્યવાહી માટે શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई. और बस हम शुरुआत करते हैं. गोमती जी, आपका स्वागत है और एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा. गोमती राधा कृष्णन जी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स हैं और उनका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 26 साल के एक विशाल समय में बीता हुआ है. वे सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हैं और जो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच अपनी लाइफ में लगती हैं और सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी जितने भी मीटिंग्स में और उसमें सब में एक बहुत तरह की पॉजिटिविटी प्रदान करती हैं. वह संयमित आचरण के साथ भावनात्मक रूप से भी बहुत संतुलित हैं. वो अस्तित्व के सभी आयामों जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक का ख्याल रखते हुए समग्र जीवन जीने में विश्वास रखती हैं. She believes in a holistic living. उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे डेंटिस्ट्री, स्टेला, देन इथिराज कॉलेज, देन भारतीय कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, SRM यूनिवर्सिटी, IDBI, इंडियन बैंक, ITC पार्क शेरेटन, कैनरा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. ये तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, बाकी लिस्ट बहुत लंबी है तो मैंने सोचा कुछ महत्वपूर्ण नाम जो दिखते हैं वो ले लूँ. और इसके बाद ही वो न सिर्फ एक काउंसलर हैं बट शी इज ऑल्सो अ योगा इंस्ट्रक्टर. तो इतनी सारी प्रतिभा जो आप में है, इसीलिए एक से एक विषय लेकर आती हैं. तो आज का जो विषय है की टू एलिमिनेट एग्रेशन और जो 8 कुंजियां हैं, चाबियां हैं, गोमती जी आप बताइए अपनी बात. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you for this wonderful introduction. So I'll start sharing my screen. Good evening, everyone. Good evening. So let me know you're able to see my screen sharing. Yeah, perfectly. Thank you. Yeah, so this is the book that I came across, 8 Keys to Eliminate Passive Aggressiveness by Andrea Brandt. So she holds a PhD. Dr. Andrea Brandt is a PhD, has over so many years of clinical experience as a renowned psychotherapist, speaker, and author. She teaches us to reinvent and empower ourselves. This subject was completely new to me when I came across this book and I saw many articles. So why I chose this book was, first let me start introducing her. She is well known for treating full range of emotional issues, especially anger and aggression, anxiety and depression. And then she also coaches people on how to
tackle the aging process, how to age gracefully. Then, of course, on relationships, which is a common topic of interest for all of us, work-life balance and workplace, especially women's issues at workplace. What got me interested in Dr. Andrea Brandt was the fact that while other coaches or other psychologists and psychotherapists, they in fact engaged us or probably taught us or they coached us into how to deal with passive aggressiveness, how to reply back, how to match eye to eye with the person who has passive aggressiveness. But when I saw Dr. Andrea Brandt book and I started reading, she has a very different approach in the sense she was like more compassionate towards the people who were indulging in passive aggressiveness, very kind and very empathetic with the people who were undergoing or who were at the receiving end as well as at the giving end of passive aggressiveness. And that is what I got interested in this book. If you get a chance to read this book, don't miss it, because there are a lot of live examples that she narrates. And she takes us step by step as to how we can make our lives better and what do we do and how do we manage this passive aggressiveness. So going further, so the 3 types of communicators. The first type, she says, aggressive communicators. They are loud, domineering, dominating. And for them, winning is everything. By hook or by crook, they need to win. Even if it is the cost of the other person losing, they feel they are entitled to win only. And they see to it that they win. So here they may be communicating in a way that it could be a win for them, whereas for the others, it could be a loss. So it will be a loss-win, a win-loss situation for them. That is what they are interested in achieving. The second type of communicator, she says, are passive communicators. They say very little, they use very few words, and they don't stand up for their rights. So why is this so? Why is it happening? And of course, and also they ignore attacks, personal attacks on them, on their personality, or even a direct attack. They ignore it. And if at all they have an outburst, which is a very rare scenario, where, they are pent up feelings, one fine day, if they burst out, they feel extremely ashamed of their behavior. Whereas they would have been at the receiving end of so many outbursts, but they feel ashamed and they immediately say sorry. They feel so sorry, and their body language also is so submissive, forward, bent, as if in procrastination of prostrating before the offender. So this is so passive communication and aggressive communication, they are 2 extremes. And when there are so many, differences between these 2 communication styles, how is it that we come across passive aggressiveness? One is the one extreme, the other is the other extreme. So when did this passive aggressiveness come into being, or how did it surface? See, on the surface, it seems similar to passive. But the anger, that is the pent-up anger, comes out in the form of subtle criticisms or subtle sarcasms that one uses in communication. So when one is quite alert and alive and, listening, when we can develop listening skills, we will be able to understand these passive communicators also, passive aggressive communicators also. That is what Dr. Brandt suggests to us. And they send a double message. Their face is smiling, but the words sound mean. So how does it happen? We will also give a lot of examples during the course of the program today. So moving further, so before we get into these 3 communication, let us get into the basics. And this is an out of syllabus topic, which I thought would be interesting for you and which would add value to understand the basics of what are the different styles of communication. So as in the animal kingdom, we always see that animals, they are always born to a particular nature. They lived up to their nature and they die to their nature. Whereas it is for human beings, it is completely different. We are born to a particular nature, maybe, but we can completely live to another nature. We can build up our nature.
and we die as a completely different human being, and this is only possible for us, our species. So getting into the different gamut of, the goals and the relationships. So on the x-axis, we may have, we can see as it is mentioned over here, which is high on goals, or, maybe it is high on courage also. It could be high on the work platform or the task platform. Whereas on the y-axis, we have got high on relationships, high on probably consideration, and maybe high on pleasure. So these x and the y-axis. So if we take an example of the turtle, so here we are relating this with us human beings. So when we relate with a turtle, so we can imagine a turtle in front of us, quite a passive animal, isn't it? Not a very active animal, quite slow in its approach. Maybe decision making is also very slow. Problem solving may be a challenge for this particular tortoise. And the style is passive, so not taking any action. So if we tell the turtle, come on, let us build a relationship, the turtle will take a backseat. Or if you tell the turtle, come on, let us start a new business. And then the turtle will say, oh no, I am not for it. And the major emotion that goes along with the turtle kind of approach is fear. Fear to take that first step forward, or, fear to take itself out of its comfort zone. That is very important for the turtle. The belief is conflicts are always bad. So it will always try to avoid, it will always try to isolate itself from problems, from problem solving, or even decision making for that matter. And the need of the turtle, turtle kind of people is security. The need to feel secure, the need to feel safe. So that is their need. And as a result, what happens? For turtle kind of people, they are low on goals and low on relationships as well. Now let us examine a shark. Shark kind of a personality, very aggressive. So for the shark, work alone matters and nothing else but the work, the task in hand. The performance should be very high. And always the shark relates with an emotion of anger, anger to achieve, anger to get into the task mode, or anger to accomplish the task. And it goes by the belief, the shark has this belief, it needs the controlling power. It has to control. There is a need to control. That is the belief with which the shark functions. And the need of the shark is having the feeling of importance. Yes, I am the boss, so everyone listens to me. That kind of a feeling. And that is the need of a shark kind of personality. And as a result, people with shark personality are very high on goals, very high on performance, very high on task getting accomplished, achievement, but they are low on relationships. We come across such people also, isn't it, in our life? Now let us examine the teddy bear type of style, very submissive. For the teddy bear, friends, family, very, very important. It likes to have people around. So for that purpose, it always feels giving in from its choices, giving in towards its freedom alone. That also it gives up. So for the teddy bear, it goes by the belief that sacrificing is very good, surrendering is very good, always listening to others, not expressing views, always being submissive. So the need is for the teddy bear is connection, friendliness. It needs to connect with people around. It needs lots of people around. So the teddy bear is always, it needs to be cuddled, it needs to be loved. The emotion need for the teddy bear is love. It wants to show love and it wants to be loved also. And as a result, the teddy bear is high on relationships, but when it comes to achieving goals, it is low on goals. So let us now come to the owl. This is the American owl, not the ones that we find in India. Very assertive style. In the sense, it maintains equipoise, composure, very calm in its approach. And this particular American owl, the species of this owl, they can converse even negative events or negative thinking, they can convert it into, they can put it across in a very positive way. That is what assertiveness means. And their belief is, they go by the belief that conflicts are good indeed.
Whereas most of us believe conflicts are bad, and we have been trained to believing conflicts are bad, never get into arguments, avoid arguments or avoid a fight. Whereas the owl goes by the belief that conflicts are good. It enables the owl to contribute in resolving a conflict. So the owl believes that it needs to contribute. So in what way can I contribute so that this situation improves, or this situation becomes better, or this conflict resolves? So that is the need of the owl, always to contribute. So the owl as a personality is high on goals also, and as well as high on relationships also. So for example, if you tell the shark kind of personality, suppose you tell the shark, the shark kind of personality, suppose they go by bike and they meet up with an accident and they get hurt, somewhere in the leg, for example. So if you were a shark kind of personality, what will you do? When the other person has hurt you, or suppose the car has come and dashed against your two-wheeler, this shark kind of personality will go for a direct fight with that person, isn't it? But suppose this is a teddy bear kind of a personality. So how will this teddy bear respond? They will say, even if the teddy bear has got hurt, they will not mind. And in fact, they will ask the other guy, oh, are you hurt? Can you go to the hospital? Are you okay? So sacrificing self-need for the other person's need, what a teddy bear is all about. And suppose a father asks the son, tonight you come home by 9 o'clock. And if the son is a shark personality, the shark will respond. The shark's son will respond, oh, you cannot control me. I will come when I want to come. Suppose this is a teddy bear son. So this particular son will say, oh, Appa, you want me to come at 9 o'clock? I will come at 8 o'clock itself. Don't worry. So such personalities we see in our life. So how do we recognize these communication styles? This is just for our knowledge, so that we are able to understand how do we bring together the turtle and the shark together, and how the passive communication works. So now, how to be assertive like the owl? So what is this assertive communication all about? So treating each other with empathy, we see the situation from the other's point of view. So what is this assertive communication all about? So when we put ourselves in the other person's shoes, it is completely different than assuming you know what they are thinking or feeling. An essential part of assertiveness is seeing others as individuals, and we reflect this understanding with I statements. Now here she's giving us the formula as to how we can communicate assertively using I statements or me statements without accusations. And she has given a few examples also. So now when we say this is different from thinking, assuming you know what they are thinking or feeling. So when we put ourselves in the other person's shoes, we start imagining as to how we feel when we are them. That is what it means. Rather than thinking what they would be thinking or feeling what they would be feeling, when we put ourselves, that is what empathizing is all about. Suppose we were in their place, how we would feel, how we would think. That is exactly what it means when we say assertiveness in communication. Any questions, any doubts? Shall we proceed further? Okay. Now, an example, she says, so when a wrong one, she says, you really hurt my feelings when you criticized my cooking in front of everyone. So when we put the responsibility of our emotions to the other person, we are not taking responsibility for our emotions. So that is exactly what she means here. She says, we as a person should take responsibility for our feeling. And that is why she says always make I statements. So the correct usage, how we can express the same thing assertively. I felt embarrassed, or I felt hurt, or I felt angry to hear you didn't like the dinner I made for our friends. I want to know what you think, but I did rather hear it privately. So by privately, she means like generally we say as a human resource personnel, we say don't criticize, condemn or complain. And if at all we need to criticize somebody, we should do it in private. All criticisms in private and all appreciation in public is what she believes in. So that is why she says any criticism or
any feedback for improvement for a person who has already done something should be kept private. And it should be one-on-one if possible. So that is what she means over here. So responsibility of our emotions we need to take. And that is why she says use I statements instead of you statements. Because we are transferring the power of our emotions. So the other person has the power on our emotions. That is not the case. She says we take complete responsibility for our emotions, for our thoughts. And that is why we use I statements. And another example, she says, wrong one, you should really go to the dentist for your teeth. They are really yellow and probably really smelling or whatever that we want to add. So the correct methodology that we use for assertiveness is, you can just relate, indirectly tell this person, I was reading about an article about whitening of teeth. Have you also heard about it? It has been there in the media for quite some time. Have you heard about it? Did you come across it? Something very subtler, and using these I statements. So this is what she's saying. So with that, we come to the end of the first session. Over to you, Taralji, for translation. And Nirmala ji, I would request you to put your video on, please, or you can stop the screen sharing. Yeah, thank you. Yes. Nirmala ji. Shall we start? Yeah. Thank you. And I'll just give a brief introduction of Nirmala ji. Nirmala ji is a sincere and dedicated student of life and leads from front, willing to learn and implement, as she shared, ASK, that is ask, attitude, skills, and knowledge. She has been working in bank for over 30 years. She came to Mumbai as a little girl, confident girl from Madurai, and she stayed in Mumbai for almost 25 years. उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है और अपने अनुभव और विशेषता का उपयोग कई लोगों के मार्गदर्शन के लिए किया है. She plays a major part in a choir group which is called Beat Choir. और उसके जो गाने होते हैं वो बहुत ही सामाजिक कॉज पर होते हैं, यानी कि ऐसे सामाजिक विषयों पर होते हैं जो आपको एक पॉजिटिविटी देते हैं. और उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है. अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक सभी पहलुओं का ख्याल रखती हैं. और जब स्वयं और लोगों को एक तरह से प्रबंधित करने की बात सामने आती है तो वो बहुत सचेत रहती हैं और इस तरह से वो काफी समाज का भला करती हैं. आइए निर्मला जी, आपका स्वागत है. आप तमिल में हमें इस विषय से परिचय कराइए. थैंक यू. Thank you very much, Taral ji, for such a nice introduction. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பை நீக்க 8 திறவுகோல்கள். இந்த புத்தகம் டாக்டர் ஆண்ட்ரியா பிராண்ட் எழுதியது. எழுத்தாளர் ஆண்ட்ரியா பிராண்ட் 35 வருட மருத்துவ அனுபவம் உள்ளவர். அவர் ஒரு கைதேர்ந்த மனநல மருத்துவர், பேச்சாளர் மற்றும் சிறந்த எழுத்தாளர் ஆவார். டாக்டர் பிராண்ட் நம்மை நாமே அறிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாமே அதிகாரம் செலுத்த உதவும் வழிகளை காட்டுகின்றார். டாக்டர் பிராண்ட் உணர்ச்சி கோளாறுகள், கோபம், ஆக்ரோஷம், கவலை, மனச்சோர்வு, புதுமை, உறவு முறைகள், வேலை வாழ்க்கை சமநிலை, அலுவலகங்கள், பெண்கள் குறித்தான பிரச்சனைகள், இவை எல்லாவற்றையும் சிகிச்சை செய்வதில் புகழ்பெற்ற நிபுணர். இப்பொழுது அவருடைய புத்தகத்தில் ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். டாக்டர் பிராண்ட் சொல்கிறார், 3 விதமான தொடர்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று. ஆக்ரோஷமான தொடர்பாளர்கள், இவர்கள் மிகவும் சத்தமாக பேசுவதோடு மற்றவர்களின் மேல் அதிகாரம் செலுத்த விரும்புவார்கள். வெல்வதுதான் எல்லாமே, மற்றவருக்கு என்னவானாலும் கவலை இல்லை. அடுத்தது செயலற்ற தொடர்பாளர்கள். ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டார்கள், தன் உரிமைக்கு கூட குரல் கொடுக்க மாட்டார்கள். மற்றவர்கள் தங்களை தாக்கினாலும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள்
தப்பித்தவறி ஒருவேளை கத்தி பேசிவிட்டாலும் உடனடியாக வெட்கப்படுவார்கள், மன்னிப்பு கோருவார்கள். அவர்களின் உடல் அசைவுகள் தயக்கமானதாக, தன்னம்பிக்கை அற்றதாக இருக்கும். இவர்கள் முற்றிலும் ஆக்ரோஷமான தொடர்பாளர்களுக்கு மாறுபட்டவர்கள். செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு என்பது மேற்பரப்பில் செயலற்றது போல தெரிகிறது. ஆனால் அவர்களின் கோபம் விமர்சனமும் கிண்டலுமாக வெளிப்படுகிறது. அவர்கள் இரட்டை செய்தியை அனுப்புகிறார்கள். அவர்களின் செயல்களும் நடத்தைகளும் முரண்பட்டவையாக இருக்கும். அவர்கள் முகம் புன்னகையுடன் இருந்தாலும் அவர்களின் வார்த்தைகள் புண்படுத்தும் விதமாக இருக்கும். செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு பற்றி ஆழமாக காண்பதற்கு முன் விலங்கு ராஜ்யத்தின் உதவியோடு அடிப்படை 4 தகவல் தொடர்பு பாணிகளை பற்றி புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். முதலாவது கரடி. கரடியின் பாணி அடிபணிதல். உணர்வோ அன்பு காட்டுவது. கரடியின் நம்பிக்கை தியாகம் மிக மிக நல்லது. கரடியின் தேவை தொடர்புகள். இதன் காரணமாக இவை நல்ல உறவுகள் கொண்டாலும் இலக்குகள் இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்தது ஆந்தையின் பாணி. ஆந்தை மிகவும் உறுதி படைத்தது. அதனுடைய உணர்வு மிகவும் அமைதியானது. அதனுடைய நம்பிக்கை மோதல்கள் நல்லவை. இதன் விளைவாக நல்ல உறவுகளும் நல்ல இலக்குகளும் கொண்டது ஆந்தை போன்ற பாணி. இதனுடைய தேவை பங்களிப்பு. அடுத்ததாக ஆமையின் பாணி. இது செயலற்ற தனம், பயந்து சுபாவம், தேவையோ பாதுகாப்பு, நம்பிக்கை மோதல்கள் மோசமானவை. ஏனென்றால் மிகவும் பயந்த சுபாவம் அல்லவா? விளைவு இலக்குகள் உறவுகள் இரண்டும் இல்லாமை. நான்காவதாக சுறாவின் பாணி. இது முரட்டுத்தனம் கொண்டது. நம்பிக்கை கட்டுப்பாடும் அதிகாரமும் தான். உணர்வோ கோபம், தேவை முக்கியத்துவம் மிகவும் வேண்டும். விளைவு நல்ல இலக்குகள் ஆனால் மோசமான உறவுகள். உறுதியுடன் தொடர்பு கொள்வது எப்படி? ஆந்தையை போல நாம் ஒருவரை ஒருவர் அனுதாபத்துடன் நடத்தும் போது மற்றவரின் பார்வை கோணத்தில் இருந்து நிலைமையை காண்கிறோம் என்று ஆண்ட்ரியா பிராண்ட் கூறுகிறார். ஆனால் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அல்லது உணர்கிறார்கள் என்று நீங்கள் எண்ணுவதை விட இது வேறுபட்டது. இன்றியமையாத பகுதி மற்றவர்களை தனி நபர்களாக பார்ப்பது மற்றும் இந்த புரிதலை குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாமல் முதல் நபர் அறிக்கைகள் மூலமாக தெரிவிக்கிறோம். உதாரணமாக, இது தவறான முறை. அனைவருக்கும் முன்னால் என் சமையலை விமர்சித்த போது என் மனதை மிகவும் புண்படுத்தி விட்டார். சரியான முறை இதோ வருகிறது. நமது நண்பர்களுக்காக நான் செய்த உணவு உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்று கேட்க எனக்கு வெட்கமாகவும் கோபமாகவும் இருந்தது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிய விரும்புகிறேன். ஆனால் அதை தனிப்பட்ட முறையில் என்னிடம் சொன்னால் நன்றாக இருக்கும். அடுத்த உதாரணம், தவறான முறை இவ்வாறு போகிறது. உங்கள் பற்களுக்கு நீங்கள் உண்மையிலேயே பல் மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும். அவை மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ளன. சரியான முறை, நான் பல் வெள்ளையேற்றம் பற்றிய செய்தி பற்றி படித்துக் கொண்டிருந்தேன். நீங்கள் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? இப்பொழுது இவ்வளவுதான். அடுத்தது ஹிந்தி, இங்கிலீஷ். Yes, yes. Thank you so much. Thank you. And is somebody else also operating? Please don't operate. Let me do. Thank you. अवनीश मिश्रा जी का स्वागत है और इनका धन्यवाद सभी को धन्यवाद। संक्षिप्त का परिचय है बहुत ही, और वो मैं देना चाहूंगा यहाँ पर। संक्षिप्त परिचय ही सही है आपका, तो वैसे ही जो है तो ये संबंधित रखते हैं प्रयास लॉज, बराबर सर, दिल्ली से। मैं प्रज्ञा राव लखनऊ से संबंध रखता हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। पिछले कुछ समय से भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ में जुड़ के काम कर रहा हूँ। LIC ऑफ इंडिया के साथ।
करीबन जो है 2 साल हो गया मुझे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ते हुए। तरल जी और हम लोग वाराणसी में मिले थे, तब से हम तरल जी से जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक तरल जी से जुड़े रहेंगे। परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे ख्याल से वार्ता का समय हो गया है, शुरू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तरल जी। आज का जो विषय है वो एक डॉक्टर एंड्रिया ब्रांड की एक पुस्तक के ऊपर है, उसके ऊपर है। डॉक्टर एंड्रिया ब्रांड ये पीएचडी है, लगभग इनको 35 वर्ष का अनुभव है साइकोलॉजी में, और 35 साल के उनको एक साइकोलॉजिस्ट में एक उनका अनुभव है, और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है ट्रीटमेंट में या इलाज करने में, जिसमें इमोशनल इश्यूज हैं, एंगर और एग्रेशन, मतलब क्रोध से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको ठीक करने में, और अवसाद की स्थिति को भी ठीक करने में इनको काफी अनुभव है। एंड्रिया ब्रांड जी का कहना यह है कि इन्होंने 8 कुंजियां बताई हैं जो कि एलिमिनेट करती हैं, मतलब जो कि जिससे हम अपनी पैसिव कह सकते हैं या आक्रामक निष्क्रियता को दूर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है, मतलब इनके अनुसार सिर्फ 3 प्रकार के कम्युनिकेटर्स होते हैं, संचारक होते हैं, जो कम्युनिकेशन के 3 माध्यम होते हैं। उसमें एक होता है जो कि आक्रामक कम्युनिकेटर्स हुए, कि जो बड़े ही दबंग, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा दबंग होती है, वो हर चीज में अपनी बातों को ही सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा, उनके लिए जीतना सबसे बड़ा आवश्यक है, वो जीत ही उनके लिए सब कुछ, ठीक है। दूसरे होते हैं पैसिव या मतलब निष्क्रिय कम्युनिकेटर, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते, वो हर चीज को या अपने ऊपर होने वाले हमलों को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आने के साथ ही साथ वो उससे शर्मिंदा हो जाते हैं, और उनकी जो एक शारीरिक भाषा है, जो उनकी एक तरह की शारीरिक भाषा है, वो भी अस्थायी होती है। वो माफी मांगने लगते हैं, या किसी तरीके का उनके अंदर एक तरीके का एक आक्रामकता शून्य के संबंध है। उसके अलावा जो तीसरे प्रकार के कम्युनिकेटर होते हैं, उनके वो एक तरह से आक्रामक एवं परंतु निष्क्रिय, आक्रामक परंतु निष्क्रिय जो है रूप से वो करते हैं, कम्युनिकेशन उनका रहता है। ज्यादातर वो उनका क्रोध और आलोचना जो है वो किसी व्यंग के रूप में या किसी तरीके के टॉन्ट के रूप में वो निकलता है। और दूसरा दोहरा संदेश अक्सर उनके देखा जाता है कि वो चेहरे से तो वो हंसते रहते हैं, बोलते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन वो शब्द जो होते हैं उनके वो बड़े अर्थपूर्ण होते हैं। ये 3 प्रकार के विशेष कम्युनिकेटर का उन्होंने एक तरह का परिभाषित किया है एंड्रिया ब्रांड के। उसके बाद उन्होंने इसको एक मैट्रिक्स के माध्यम से समझाया, कि जिसमें आपके अपने गोल और संबंधों में आप किसको कितना महत्व देते हैं, उसके बारे में बताया उन्होंने। तो जैसे अगर हम एक कछुए की बात करें, तो कछुआ एक पैसिव होता है, उसको हर चीज में वो एक डर के रहता है। जैसे ही कोई उसको लगता है कि हाँ उसको किसी प्रकार का खतरा है, तो वो अपने आप को अपने शेल में छुपा लेता है। किसी भी कन्फ्लिक्ट में या किसी तरीके के कोई भी वाद विवाद से बचता है। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता उसकी सुरक्षा होती है, और वो अपने गोल्स के प्रति उतना ना ही वो अपने गोल्स के प्रति वो उतना सजग होता है, और ना ही वो अपने संबंधों को, ना ही वो उद्देश्य को महत्व देता है, ना ही वो संबंधों को। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपने आप को बस उसी में वो खुश रहता है। एक अपनी उसकी छोटी सी दुनिया होती है, उसमें ही वो खुश रहता है। उसके अपेक्षा जब हम अगर हम तुलना किसी शार्क मछली से करते हैं, तो उनका जो भी तरीका होता है, जो भी उनका रहने का तरीका होता है, वो बड़ा ही अग्रेसिव होता है, बहुत ही आक्रामक होता है। वो हमेशा एक तरह का क्रोध या एक तरह का डराव, एक तरह का डोमिनेटिंग कह सकते हैं, या
उस तरह के वो उनका व्यवहार होता है। वो पूरे जहाँ भी रहती हैं, जिस भी मतलब समुद्र में जहाँ भी पाई जाती है, वहाँ पे वो अपना कंट्रोल या अपनी सारी वो अपने अनुसार वो उस जगह को करती हैं। दूसरा, उनके लिए जो है, उनके लिए जो गोल्स भी हैं, वो भी जो उनके उद्देश्य जीवन के, वो भी उनको ऊपर रखती हैं। संबंधों में वो थोड़ा, संबंधों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। उनके लिए संबंध उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनके उद्देश्य, चाहे वो शिकार करना हो या किसी और तरीके की उनकी, जो कोई भी उनको चुनौती देता है तो उसको, वो उस चुनौती को स्वीकार करके और उसको उसके अनुसार ही, अपने क्रोध या जो भी उसके अनुसार ही उसको डंडे देते। उसके बाद जो तीसरा आता है एक टेडी बियर, एक छोटा बालू, जो कि प्रेम का प्रतीक है, जिसका जो एक बहुत ही साधारण उसमें रहता है। उसके लिए जो है मतलब कोई भी किसी चीज का त्याग करना या ना, उसके लिए बहुत अच्छा, वो अच्छा मानता है उस चीज। उसके लिए संबंध सबसे ऊपर होते हैं। वो बाकी और सारी चीजों के लिए या प्रेम के लिए वो सारे अपने उद्देश्यों को भी भूल सकता है व्यक्ति। वो प्राथमिकता में वो उसके लिए संबंध ही होता है। उसके बाद जो चौथा प्रकार है वो एक उल्लू का है। उल्लू इमोशनली बड़ा काम होता है उसका, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट उसके लिए बहुत कोई माने नहीं रखते। वो कन्फ्लिक्ट से और पसंद करता है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा वो अपने गोल्स के लिए भी हाई, मतलब उसका जो अपना उद्देश्य है उसके लिए भी वो अपने आप को, उद्देश्यों को भी ऊपर रखता है और साथ ही साथ वो संबंधों को भी ऊपर। और दूसरा ये है कि वो अपनी चीजों को, जैसे अपनी चीजों को वो समझते हुए तभी वो आगे बढ़े। तो ये 4 उदाहरण इन्होंने दिए हैं। इसमें इन्होंने एक चौथी चीज बताई है कि किस तरीके से हमें असर्टिवली, मतलब किसी तरह से हमको दृढ़तापूर्वक संवाद कैसे करना चाहिए। इसके लिए एंड्रिया ब्रैंट जी का कहना है कि हम एक दूसरे के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हैं और हम स्थिति को एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखते हैं या उसकी भावनाओं को भी प्राथमिकता देते हुए हम उसको उसमें जो है ये संवाद करते हैं। मुखरता जो है वो एक अनिवार्य हिस्सा, दूसरे को व्यक्ति के रूप में देखना, और हम बिना किसी आरोप के मैं बयानों के साथ इस समझ को प्रतिबिंबित करते हैं। ये इनका जो असर्टिव कह सकते हैं या कह सकते हैं दृढ़तापूर्वक संवाद को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें जो इनका एक उदाहरण है, उसमें उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा कि मतलब जो उन्होंने पहला उदाहरण दिया उसमें इन्होंने ये लिखा है कि आपने वास्तव में मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जब आपने सबके सामने मेरे खाने पकाने की आलोचना की। यह एक तरह का गलत प्रकार का संवाद था। इसको इन्होंने बताया कि अगर हम इसको इस तरीके से, मतलब एक असर्टिव उसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि मुझे यह सुनकर शर्मिंदगी और गुस्सा आया कि मैंने हमारे दोस्तों के लिए जो आज रात की भोज बनाया वह आपको नहीं पसंद आया, और मैं इसका जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, और इसको मैं या मतलब जो भी असर्टिव जिस तरीके का जो भी संवाद होता है या दृढ़तापूर्वक जो भी संवाद होता है, उसमें व्यक्ति जो है दूसरे के दृष्टिकोण को अपने यहाँ समझते हुए वो उस तरीके से वार्तालाप करता है जिसमें वो जो भी मतलब जो भी उसका फीडबैक कह लीजिए, या जो भी उसको एक तरह का विचार उसके प्रति है, तो वो चाहता है कि उसको वो अकेले में या एकांत में उसको सुने, उसको एक तरीका मतलब दोनों एक पब्लिक इल्मी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो सबके सामने वो उस तरीके के विचारों को वो व्यक्त नहीं करना चाहते। ये अभी तक जो है, जो इनकी शैली है, मतलब जो इनका कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो इन्होंने अभी तक इस तरह बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी
पार्ट 2 जारी रखिए। Kindly unmute, Gomti ji. Yeah, I'll share my screen. Thank you so much, Nirmala and Avinash, for the beautiful translation. Yeah. You're able to see my screen sharing now? Yes, yes. So moving further, we nail the topic now. Yes. So what is passive communication, passive aggressiveness? Passive aggressiveness is one of the major 4 styles of communication. Andrea Brandt says that passive aggressiveness arises from the taboo our society places on anger. So this was a revelation, when anger management, we do not know how to manage our anger. And when society, so as a culture, anger is supposed to be bad. That is what an impression has been formed. So when we get angry, our parents also keep telling us, why are you angry? Don't get angry. Tell what you want to tell. Why are you so angry? So anger is something that we shun in society generally. So the taboo, she says, that has been placed on anger, that is exactly how this passive aggressiveness has arisen. And the word passive aggressiveness, that's although this must have been existing since time immemorial, this word passive aggressiveness was formed during World War II when the soldiers behaved passive aggressively. In the sense, when their high command ordered them to do something, they said yes, yes, yes. And when it came to get into action, they faltered or they did not act when it was called upon them to act. So although verbally they had said yes, yes, yes to their high command, but when it came to taking action against the enemy, they completely sabotaged. So that is when during World War II, this word passive aggressiveness was coined. This behavior was given the name passive aggressiveness at that particular point of time. Now going further, so passive aggressive people, so what happens here? They don't set and don't know how to set personal boundaries. And this is one of the important keys that she says. One of the 8 keys is about setting personal and healthy boundaries for our own self. So, and when people overstep these boundaries, they swallow their anger. See, this is what happens. So we don't retaliate, we don't react, we swallow our anger, we bear it, and we pent it up in our heart. But anger does not go away. It is an energy that needs to be expressed. So how to express anger? We are not aware. So we have not been taught in schools or colleges how to deal with our anger. What do? How do we express it? So that is why this is so complicated and this is so difficult for us. So the passive aggressive often projects their anger onto other people. So probably the person who is attacking or the person who is aggressive with us, we have no guts to be aggressive with the same person. So we direct our aggression towards another person that is also passively being aggressive out of no fault of the other person. So others might actually not be angry at all, but the passive aggressive has the capability to actually provoke anger in the other person because it is not the other person's fault, and then to justify their feeling. And then when they realize, oh my God, whom am I taking my anger on? And then they start justify their feeling as to whatever has happened with them should not happen with anybody else, all such communications. So one important key to overcome passive aggressiveness, she says, is to set healthy and personal boundaries in the beginning itself. That is very important. And another one, passive aggression, she says, is also a feeling of being powerless.
So I do not know how to handle the situation. I feel so low. I do not have the power. I feel so powerless. So it is no coincidence, like the roots are often to be found in our childhood. So this point of, why the roots, she says, the roots of becoming passive aggressive is formed in our childhood itself. So whereas we said that, earlier in the animal kingdom, they are born to their nature, they live up to their nature, and they die to their nature, no difference. But for human beings, so as we start experiencing life, so for example, as we said, suppose there is, she says a classic example of the parents, if one parent is a dominating parent and the other parent is a subservient parent, very submissive, always submissive, children are likely to develop, she doesn't say compulsorily will develop, they are likely to develop some passive aggressiveness personality traits. Why does she say this? Because from the subservient parent, the parent who is submissive or who is, always sacrificing or always surrendering to the needs of the family members or to needs of everyone else apart from herself or himself, what happens is the children learn that the powerful people cannot or should not be approached directly. So this is what a submissive person does, isn't it? They cannot approach directly. Suppose a partner in the marriage is submissive. Mostly these are the women of the house in our society. Seldom we find men, not dominating, but we have cases of men also being less dominating. But mostly this happens to women where they are subservient, and children learn that it is not okay to attack directly. So what happens? They cannot retaliate. As children, they cannot retaliate. They cannot talk back to their elders, especially parents. So they have this feeling, pent-up feeling of not able to exercise their freedom or not able to exercise their choice. Maybe it may be a simple thing as a food that they don't like, but they cannot express because this is on the table, this is on your plate, you have to eat it, you have to eat it. Explicit, implicit obedience is what is expected from our children. So as a result, what happens? Children start using passive aggressiveness as a strategy, probably unintentionally or maybe sometimes even maliciously. We never know. So this is what she said. That is why this passive aggressiveness needs to be addressed at a very young age when we find children being passively aggressive. So this was a great learning for me too. Moving further, now how do we check whether we are passively aggressive? So she also gives a checklist. So this is some of the points that she has narrated in her book. So when we withhold praise or when we withhold attention or a positive feedback, when someone else deserves or asks for it. So mainly this has a lot to do with what has happened in the background or what has happened in the past, that this passive aggressiveness is manifesting in the present. And second one, she says, is failing to follow through. Failing to follow through meaning failing to monitor when children behave in a particular way that is not conducive to society standards or requirement. So how do we monitor them? Then third one, stall when an important issue needs to be resolved. So because of our fear, we can imagine the turtle. Because of our fear, we always want to be in our comfort zone. We don't want conflicts. So we stop getting into problem solving. We stop from resolving the conflict. We think, oh, time will heal or maybe time will take its own course. But the problem does not get resolved. It is still there. So when we stall, that becomes an important issue which needs to be resolved when we don't take action. Fourth one, she says, withholding intimacy as a way of punishment. So even I have experienced, doing it myself. Most of it, I find I'm doing it. I am being passively aggressive. Probably now I have become, aware of it. So we have all these defense mechanisms in place, isn't it? So if we cannot make our way, by the way we want or by talking clearly or openly,
we have our own way, like we become passively aggressive. And I have found that I have been passively aggressive on many occasions. From reading the book, I discovered that I have also been very passively aggressive. So withholding intimacy. So when we don't give time, for example, to our near and dear, or to our loved ones, when they really deserve it or when they require it. So that is actually withholding, isn't it? So next one, she says, engaging in sabotaging behavior. So this could mean, this could actually mean, keeping score. Oh yeah, you did this to me. One day I will give you back, in my own way. I will be passively aggressive and I will give it to you back in my own way. That is sabotaging behavior. Not only self-sabotaging, but also sabotaging the other person. Sixth one, respond with minimal words during important discussions. I actually find myself doing this most of the time. For example, I don't know, fine. Just responding that way without showing any interest in the conversation. When actually we are supposed to be participating in the discussion, when we keep quiet without much response, that is also being passively aggressive, she says. Respond in sarcastic ways about life, yourself, or others. So using sarcasm, or you can also say, background, compliment, like how you ground your compliment towards another person. For example, boosting the other person initially and then pulling them down the next statement, in the next statement itself. So for example, she says, suppose a person has got, a promotion, and internally you are feeling very jealous, but we say, on the face, we say, hey, congratulations on your success, on your promotion. You are very lucky, isn't it? So when we add this sugar-filled compliment and we end it with pulling the person down. So because you were lucky, you got the promotion. So that is, using sarcasm in the conversation, like being passively aggressive. So luck played a favor on you. It was not your effort, but you were lucky enough to get that promotion, or you were lucky enough to get that increment. Okay. So that way. So using sarcasm in our communication is also being passively. It may not appear hostile, or, we don't indulge in hostility, but it means the same. It may sometimes, she says, it may be even worse than a direct aggression. She says that because it will depend on the meaning that the person receiving gives it. The person receiving this conversation understands that it is actually aggression. So it is nothing but a passive form of an aggression. So eighth one, feeling frustrated, disappointed, or irritable a lot, sometimes without reaching anger. So irritation, frustration, this little small irritants in our life. So feeling those things are also being passively aggressive. Look at situations negatively even when they are going well. So everything in my life is going all right, but still I am capable of looking at life in a negative manner. So that choice I exercise. So that is also being passively aggressive, she says. Make small negative comments underlying someone else's self-esteem. So for example, you look very beautiful. If I say, complimenting the person, and I say, with your makeup. So I am adding with your makeup. So what am I doing actually? I am pulling down the person. So I'm indirectly telling, and what she is hearing is, so only if I put makeup, I look beautiful, otherwise not. That is what the other person is hearing, isn't it? So pulling down the other person's self-esteem, that is also being passively aggressive. Feeling depressed frequently. So frequent bouts of getting into depressive moods, those mood swings, that is also being passively aggressive. Never say, this is last but not the least. All of us use this. She says, never say no or always say yes. Like the teddy bear. Yes, yes for everything, because we want to keep the relationship alive. We don't say no. This is also when we don't say no, when it is required to say no, that is also being passively being aggressive, because we are not happily saying yes over here. Only it is a lip service. From our mouth, the words come out yes, but actually we mean no. But that also is
we do something very unhappily. We are not interested in that work, but we say yes, 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 especially in the workplace or maybe even in the family atmosphere. Going further. So, sorry. So how to set, why do when do we set boundaries? What happens when we don't set boundaries? Not protecting our personal spaces. So our personal space is our space. So when we need to protect that space, and if we don't protect, we get into being passively aggressive. We don't set our boundaries. Revealing too much about ourselves during the course of a conversation, or maybe in our low moments when we are very low, when we reveal too much about ourselves, which is not essential, that also we are breaking our own boundary. Getting caught up in other people's troubles. Okay, the intention is always there to help another person, but getting caught up in that mirage of the other person's trouble. Of course, we want to solve their issue. Of course, we want to help them. Of course, we want to guide them in whatever way we can. But getting caught up in that pool where you are not able to come out yourself, that is breaking your own boundary. Neglect own needs for others. So keeping others' needs paramount and subserving your need. And then the next one is tolerating abuse. How long to tolerate an abuse, whether it is a verbal abuse or whether it is a physical abuse or whatever, any kind of abuse. Tolerating it for a long time also amounts to not setting boundaries for self. And why this is important to educate children, she says, because children do not know how to handle an abuse, whether verbal or physical or in whatever form. They are not equipped to handle abuses, even from a dominating parent. So easily, and another one she says, easily persuaded by one religious creed or another. So we do see in social media a lot of religious, taunting happening. So how people persuade another person religiously. So when we don't set boundaries, all these are bound to happen. She also has a simple example, not setting boundaries, not saying no and saying yes, and how passive aggressiveness happens. She gives an example of two girls, Lucy and Kate, who are working in a bookstore. They are friends. Both of them are working in a bookstore. So Lucy comes to Kate and she asks for a favor. Can you help me with this? I have some work. Can you help me? And it requires to be done as soon as possible. And Kate, she says, of course, sure, I will do it. And then Lucy leaves and she goes for some other work. And Kate, meantime, she has her own work. She starts doing her own work. And by the time she realizes it is almost lunchtime, and she leaves for lunch. When she comes back from lunch, she is observing Lucy doing her work, the work that she had assigned to Kate. She was doing it herself. And then she got very angry. Lucy gets angry and she says, Kate, if you were not interested in doing my work, you should have said so. Why did you agree? She gets very angry. So Kate replies, you didn't say that it was urgent, did you? So then Lucy says, I told you as soon as possible. That means it was very urgent for me. So here what happens? And Kate says, okay, so if it is urgent now, I will leave my work and I will do it for you. And then Lucy says, just forget it. She's extremely angry with Kate. Now she doesn't want Kate to handle it at all. Now what happened over here? Kate almost easily, she said yes to Lucy without even thinking about her own time frame and her own agenda. She also had some work to do, and she did not even ask as to how much time frame she is giving her, that Lucy is giving her to complete the work. She did not ask, nor was she concerned about, nor was she aware of her own time frame, and nor was she aware that she also had some work, she had an agenda. Very easily, she could have said no to Lucy. But because she was not able to say a vehement no, she said yes. That is being passively aggressive, wanting to satisfy the other person. Wanting to always say yes to the other person. Not able to say no when it is required.
This is a classic example of a passive aggressive behavior that Dr. Brandt narrates over here. Very simple, but yet a profound one. So when we say yes, when it is required for us to say no, and we are actually very unhappy about saying yes, not happily saying yes, but just a lip service, but then not doing it also, and then getting the other person angered. So this is what we understand when we say we have to set our boundaries. Set healthy and personal boundaries first is a tip, and also another key for handling our passive aggressiveness. And this picture is very clear about how we differentiate between passive aggressive, and assertive behavior. Passive is emotionally being dishonest, like how Kate was emotionally being dishonest with Lucy. Indirect, inhibited, very shy, self-denying, blaming and then apologetic. First blaming and then being apologetic. So here, as we saw Kate responding to Lucy, others' rights, that is initially others' rights needs to take place, it takes precedence over mine. So when we say yes, we feel that others' rights are more important than ours. That is where we end up saying yes immediately, which need not be the case. We can plan ourselves. We can also say a no. Wherever it is required, we need to say a no. So what is passive aggressiveness all about? Again, it is also the same as passive, emotionally being dishonest. It is also indirect. It is self-denying at first, self-enhancing at the expense of others later. Like how Kate responded very late. If it is urgent, then I will do it for you now. But wherein Lucy had expected it to be done then and there. So self-denying. So first we deny that our job is secondary, her job is primary, or we give a feeling that her job is also primary, but we end up doing our job instead. So at the expense of others later, when we do such things, subtly making choices, clear that my rights and needs only prevail, subtly doing this instead of directly doing it. Aggressive behavior is inappropriately honest. So the word inappropriate is very important for us to note over here. So aggressive behavior is always inappropriate behavior. It is also being direct, expressive, attacking, blaming, controlling, self-enhancing at the expense of others. So this is what is being direct about. Direct, attacking. Here passive aggressive is indirect and without attacking, subtly doing it. The same thing, probably even more subtly. So some people tell that, being aggressive and I like people being direct on the face. So aggressiveness is tolerated by some people more than being passively aggressive. So it all depends on the individual. So what are the individuals' nature, how they have developed their nature from their past experiences. So some people believe that it is absolutely inappropriate to be direct, aggressive or attacking. Actually, being passively aggressive, people can tolerate more. Some of us are like that also. And what is assertive, which is the best form of communication? Appropriately honest, direct, self-enhancing, expressive, confident, empathetic. So here, emotions of the other person is also taken into consideration. When we say we should be assertive, it means it is a win-win situation. So in aggressive, it is a win-lose situation. In passive, of course, it's a lose-win situation. I always end up losing, the other person wins. And passive also, I want to win, but very subtly, the other person should lose. That is the aim, or that is what happens in the end. But being assertive is taking into consideration my needs and my emotions, and also the other person's needs and the other person's emotions. So I clearly express myself. So both of us, the other person and me, both of us have our needs and our rights, which needs to be addressed. So a win-win situation is what assertive communication is all about. Now here comes the 8 keys. So these are actually the 8 keys to eliminate passive aggressiveness in that book that she has given. These are the chapters in her book. Recognize your hidden anger, the first point. So actually, in our families, in some of our families,
passive aggressiveness is a tradition. People follow it as a tradition itself. So we are not supposed to be loud. We are not supposed to be direct. We are not supposed to attack. We should keep our voice low. So this passive aggressiveness becomes a tradition in some families. And in some organizations, passive aggressiveness is a protocol itself. Speaking loud is a taboo. No speaking loud, no attacking, nothing. But passively being aggressive is a protocol that they maintain in some organizations, she says. And in some places, it is a norm followed, an exceptional norm that people follow. So this passive being passively aggressive has taken an upper seat. People are indulging in being passively aggressive to convey what their needs. Reconnect your emotions to your thoughts. So that is what we saw in the beginning itself, isn't it? Empathizing. So if I were in the other person, how would I feel? How would I think? Instead of thinking what the other person could be thinking, or instead of trying to feel what the other person could be feeling, if I am putting myself in the other person's shoes, I will be able to reconnect my emotions, my thoughts. Sorry? Please sum up in 1 minute. Time is already up. Yeah, it's almost over. This is the final slide. Yeah. Listen to your body. That is, listen to your body, what it is communicating to you. So when we are angry, our body also reacts in a certain manner. Maybe we feel heaviness in our chest, or for some people, we may get a headache. So listen to what your body is communicating to you. Set healthy boundaries, as we saw earlier. Communicate assertively. Reframe conflict. So give a different meaning to a conflict that is happening. Give a positive meaning to the conflict that has happened. Interact using mindfulness. That is a prepared communication. If you are able to, most of our communication happens spontaneous, impulsive, isn't it? So she says if we are mindful of our communication. So that is what is necessary. And problem solve for better outcomes. So keep solving problems, keep decision making your priority for better outcomes. So keep at it, keep practicing is what she says. So these are the 8 keys for eliminating passive aggressiveness. So with that, I come to the end of my session in English. Thank you so much. So Thank you. Thank you. Will I stop sharing? Yes. Yeah. Nirmala ji, please go ahead with your version. Thank you. செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு என்றால் என்ன? செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு என்பது தகவல் தொடர்பு குறித்த 4 முக்கிய பாணிகளில் ஒன்றாகும். நம் சமூகம் கோபத்தின் மீது வைத்துள்ள தடை அல்லது கெட்ட பெயர் காரணமாக செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு எழுகிறது என்று ஆண்ட்ரியா பிராண்ட் கூறுகிறார். செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு நபர்கள் தனிப்பட்ட எல்லைகளை அமைக்க மாட்டார்கள். ஏனென்றால் எவ்வாறு அவற்றை அமைப்பது என்பதே அவர்களுக்கு தெரியாது. மற்றவர்கள் அந்த எல்லைகளை மீறும் போது அவர்கள் தங்கள் கோபத்தை விழுங்குகிறார்கள். ஆனால் அந்த கோபம் எங்கும் போகாது, போக இடமில்லை. அது வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஆற்றல். எனவே செயலற்ற ஆக்கிரமிப்புவாதிகள் பெரும்பாலும் அந்த கோபத்தை அடுத்தவர்கள் மீது திணிக்கிறார்கள். உதாரணமாக, தன் மேலதிகாரியின் மேல் உள்ள கோபத்தை வீட்டில் காட்டுவது. மற்றவர் கோபம் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு உண்மையில் அந்த நபரின் கோபத்தை தூண்டுகிறது. பின்னர் அவர் உணர்வுகளை நியாயப்படுத்துகிறது. செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு என்பது சக்தியற்ற உணர்வு, கையாலாகாத்தனம். இதனுடைய வேர்கள் பெரும்பாலும் நம் குழந்தை பருவத்திலேயே காணப்படுவது தற்செயல் அல்ல. பெற்றோரில் ஒருவர் மேலாதிக்கம் செலுத்தி மற்றவர் கீழ்ப்படிந்தால் குழந்தைகளில் சில செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு பண்புகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. அடிபணியும் பெற்றோரிடமிருந்து சக்தி வாய்ந்த நபர்களை நேரடியாக அணுகக்கூடாது என்பதை குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். நீங்கள் செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பாளராக இருக்கிறீர்களா? இந்த பட்டியலில் சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். யாராவது பாராட்டு அல்லது ஒப்புதல் கேட்கும் பொழுது தகுதி இருந்தாலும் அவரை அலட்சியப்படுத்துவது. சொன்ன சொல்லை பின்பற்ற தவறுவது. ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டி இருக்கும் போது அதை முடக்குவது. ஒருவருக்கு தண்டனையாக அவரிடமிருந்து விலகி இருப்பது. நாசகார நடத்தையில் ஈடுபடுவது. முக்கியமான விவாதங்களின் போது குறைந்த வார்த்தைகளில் பதிலளிப்பது. எடுத்துக்காட்டாக, ஓஹோ, எனக்கு தெரியாது, சரி சரி. தங்களை பற்றியோ அல்லது மற்றவர்களை பற்றியோ நக்கலாக பதிலளிப்பது. சில நேரங்களில் கோபம் வரை போகாமல் விரக்தியாகவோ ஏமாற்றமாகவோ
அல்லது எரிச்சலாகவோ உணருவது. சூழ்நிலைகள் நன்றாக இருக்கும் பொழுது கூட எதிர்மறை கண்ணோட்டம் கொள்வது. சிறு சிறு விமர்சனங்களால் அடுத்தவரின் சுயமரியாதையை சிதைப்பது. அடிக்கடி மனச்சோர்வடைவது. ஒருபோதும் இல்லை என்பதில்லை அல்லது எப்பொழுதும் ஆமாம் போடுவது. நீங்கள் நிறைய ஆமாம் சொல்வீர்கள் என்றால் கோபத்தை காட்டுவது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று அர்த்தம். அடுத்ததாக பலவீனமான இலைகளின் பண்புகளை காணலாம். பலவீனமான இலைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கான பட்டியலையும் ஆண்ட்ரியா பிராண்ட் நமக்கு தருகிறார். தனிப்பட்ட சொந்த இடத்தை பாதுகாக்காமல் இருத்தல். அளவுக்கு அதிகமாக விஷயங்களை வெளிப்படுத்துதல். மற்றவர்களின் பிரச்சனைகளில் சிக்கிக் கொள்ளுதல். மற்றவர்களுக்காக சொந்த தேவைகளை புறக்கணித்தல். துஷ்பிரயோகத்தை பொறுத்து கொள்ளுதல். ஒரு மத நம்பிக்கை அல்லது மற்றொரு மதத்தால் எளிதில் மனமாற்றம் கொள்ளுதல். நிஜ வாழ்க்கையில் செயலற்ற ஆக்கிரமிப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு கூறுகிறார் ஆண்ட்ரியா பிராண்ட். லதாவும் மீனாவும் ஒரு புத்தக கடையில் ஒன்றாக வேலை செய்கிறார்கள். லதா மீனாவிடம் ஒரு முக்கியமான உதவியை சீக்கிரம் கவனித்துக் கொள்ளும்படி கேட்கிறாள். மீனா முதலில் தனது சொந்த விஷயங்களை செய்கிறாள். பின்னர் மதிய உணவிற்கு செல்கிறாள். அவள் திரும்பி வந்ததும் லதா தன்னைத்தானே அந்த பணியை செய்வதை பார்க்கிறாள். லதா மீனாவிடம் கோபத்தோடு கேட்கிறாள், உன்னால் முடியாது என்றால் ஏன் ஒத்துக்கொண்டாய்? மீனா சொல்கிறாள், அது அவ்வளவு அவசரம் என்று எனக்கு தெரியவில்லையே. லதா, விரைவில் என்று நான் சொன்னேனே என்று கோபத்தோடு கூறுகிறாள். மீனா சொல்கிறாள், எனக்கு வேறு சில விஷயங்கள் முடிக்க வேண்டியிருந்தன. முக்கியமானதாக இருந்தால் என்னால் இப்போதும் செய்ய முடியும். நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை. லதா வருத்தத்தில் சொல்கிறார், விட்டுவிடு. மீனா என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? அவர் காலக்கெடுவை கேட்கவில்லை. தனது சொந்த நிகழ்ச்சி நிரலை கருத்தில் கொள்ளவில்லை. ஆனால் ஒத்துக்கொண்டு விட்டார். பின்னர் அதை செய்வதையும் தாமதப்படுத்தினாள். அது எவ்வளவு அவசரமானது என்று தனக்கு தெரியாது என்று சொன்னார். ஆனால் அது அவசரம் என்று அவருக்கு தெரியும். எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதையும் எளிதில் அறிந்திருக்கலாம். அவளால் சமாளிக்க முடியுமா இல்லையா என்பதை யோசித்து இல்லை என்று எளிதாக சொல்லியிருக்க முடியும். இல்லை என்று சொல்வதை தவிர்ப்பதற்காக மட்டுமே அவள் ஆம் என்றாள். இதனால் நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம்? நமது சொந்த தொடர்பு முறையை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வெவ்வேறு தகவல் தொடர்பு பாணிகள், அவற்றின் வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியம். செயலற்ற பாணி உடையவர் எப்படி இருப்பார்? உணர்ச்சி ரீதியாக மறைமுகம், நேர்மையற்றவர், மறைமுகம் கொண்டவர், தடுக்கப்பட்டவர், சுயமறுப்பு செய்பவர், குற்றம் சாட்டுபவர், மன்னிப்பு கோருபவர், மற்றவரின் உரிமையும் தேவையும் தன்னை விட முக்கியமானவை என்று கருதுபவர். செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு பாணியை உடையவர் எப்படி இருப்பார்? உணர்ச்சி ரீதியாக நேர்மையற்றவர், மறைமுகம் கொண்டவர், முதலில் தியாகம், பின்னர் அடுத்தவரை விதித்து முன் செல்பவர், நயமாக தன்னுடைய உரிமை மற்றும் தேவையை பிரதானப்படுத்துபவர். ஆக்கிரமிப்பு பாணி உடையவர் எப்படி இருப்பார்? பொருத்தமற்ற நேர்மை, நேர்முகம், வெளிப்படை தாக்குதல், குற்றம் சாட்டுதல், கட்டுப்படுத்துதல், மற்றவரின் இழப்பில் முன்னேறுதல், இந்த குணங்களை கொண்டவராக இருப்பார். தன்னுடைய உரிமையும் தேவையும் மிக மிக முக்கியமானவை என வலியுறுத்துவார். உறுதிபாணி உடையவர் எப்படி இருப்பார்? இதுதான் மிகவும் நல்ல பாணி. பொருத்தமுள்ள நேர்மை, நேர்முகம், சுய மேம்பாடு, தன்னம்பிக்கை, எல்லோரின் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பும் அனுதாபமும் கொடுப்பது, இந்த குணங்களை கொண்டவராக இருப்பார். தான், பிறர் இருவருடையவும் உரிமை மற்றும் தேவை முக்கியமானவை என்பதில் மிக்க தெளிவு கொண்டவர். கடைசியாக, செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு என்ற சிக்கலான தலைப்பை பல எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பேச்சாளர் கையாண்டாலும் செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பை எவ்வாறு கையாள்வது, எப்படி சமாளிப்பது, செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு நபர்களுடன் இணைவது போன்ற தலைப்புகளை பற்றி அவர்கள் எழுதியிருந்தாலும் டாக்டர் ஆண்ட்ரியா பிராண்டை என்னை தேர்வு செய்ய வைத்தது என்னவென்றால், அவர் செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பை பயன்படுத்துபவர்கள் மீது இரக்கத்துடன் கனிவான மற்றும் அனுதாபமான பார்வையை அளிப்பதுதான். இந்த கண்ணோட்டமே இவருடைய புத்தகத்தில் மேலோங்கி நிற்கிறது. தன்னைத்தானே அறிந்து கொள்வது, தன்னுடைய மைண்ட்ஃபுல்னஸ் உடன் இருப்பது, இந்த மாதிரியான
திறவுகோல்களை அவர் நமக்கு தந்துள்ளார். Back to moderator. Thank you very much. Thank you so much, Nirmala ji. It was really wonderful. Now, Avinash, yeah, you can go ahead, sir, with the Hindi version. Thank you. अब जो हमारी लेखिका हैं इंडिया ब्रांड जी ने, उन्होंने जो ये निष्क्रिय आक्रामकता है इसके बारे में बताया है कि यह जो है हमारे समाज में उत्पन्न, जैसे क्रोध को हमारे समाज में एक वर्जित माना गया है, और निष्क्रिय जो भी निष्क्रिय आक्रामक लोग होते हैं वो अपनी एक व्यक्तिगत सीमाओं को नहीं बना पाते, वैसे एक सेट नहीं कर पाते, और जनरली नहीं, और या नहीं जानते, और जब भी लोग उन सीमाओं को लांघते हैं तो वो अपना क्रोध निकल लेते हैं, लेकिन वो गुस्सा खत्म नहीं होता और एक ऊर्जा के रूप में वो व्यक्त करने के रूप में वो जरूरत बना रहता है। इसलिए निष्क्रिय आक्रामक अक्सर अपना गुस्सा दूसरों पे डालते हैं। हो सकता है कि दूसरे बिल्कुल भी क्रोध ना हो, लेकिन निष्क्रिय आक्रामक लोग वास्तव में दूसरे व्यक्ति में अपनी भावनाओं को उचित ठहराने के लिए क्रोध करते हैं। निष्क्रिय आक्रामकता जो है वो शक्तिहीनता की एक भावना है। हमें ये संयोग नहीं है, इसकी जो है एक जड़ है वो हमारे बचपन से ही जुड़ी है। हमारे बचपन में जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ होता है, समझा हुआ था, उसके हिसाब से कभी कभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे माता पिता होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, या किसी दूसरे वो एक जिनकी वजह से एक जो है वो पैसिव या कह सकते हैं या निष्क्रिय आक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जो है अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी भी हमको किसी शक्तिशाली व्यक्ति से सीधे नहीं मिलना चाहिए या सीधे उसको अप्रोच नहीं करना चाहिए, ये सीधे उसको संपर्क नहीं करना चाहिए। ये हमारे बचपन में जो भी व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके की वो माहौल देखते हैं उस हिसाब से धीमे धीमे उनके बीच में इस तरीके की वो एक तरह की वो आक्रामकता वो डेवलप हो जाती है। इसमें निश्चय आक्रामकता के लिए जो एक चेकलिस्ट उन्होंने बनाई है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से कुछ 12 प्रकार दिए गए हैं जिनके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो निष्क्रिय आक्रामकता या पैसिव एग्रेसिवनेस का कितने गुण उसके अंदर दिख रहे हैं। उससे पहला है कि जब कोई भी व्यक्ति हकदार हो या प्रशंसा की मांग करे, उस पर कोई भी जो है वो सकारात्मक प्रक्रिया को रोक देते हैं, वो उससे जो है बचते हैं। किसी की प्रशंसा करने में या किसी को भी एक सकारात्मक उसको प्रतिक्रिया को देने से बचते हैं। उसके बाद वो पालन करने में, किसी चीज के भी पालन करने में वो असमर्थ होते हैं, असफल हो जाते हैं। अक्सर वो कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा लोगों को करने के लिए, लोगों के साथ में करने के लिए, लेकिन बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उतना वो सफल नहीं हो पाते। और उसके अलावा ये वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनके जीवन में, उनको भी वो हल करने में पीछे रहते हैं। ये भी एक विशेषता है कि जो भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं वो उनको भी हल करने में पीछे रहते हैं, और चीजों को टालने की या करने की उनके अंदर ज्यादा हो रहती है। उसके अलावा अगर किसी के साथ में अगर उनको जो उनका बर्ताव होता है वो बड़ा ही एक तरह का सब कुछ तबाह करने वाला, या कह लीजिए सब कुछ एक सजा देने वाली प्रवृत्ति के साथ उनका एक बिहेवियर होता है, टॉन्टिंग बिहेवियर कह सकते हैं, या कह सकते हैं उनको कि उनका बर्ताव दूसरे को एक तरह से मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाने वाला हो। जनरली ज्यादातर जो भी उनके संवाद होते हैं उसको वो बहुत कम से कम शब्दों में कहना पसंद करते हैं कि हाँ, जैसे हाँ हाँ हूँ, मुझे नहीं पता, अच्छा ठीक है,
इस तरीके की चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं और ज्यादातर चीजों को वो टालने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो किसी को किसी के साथ किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण चर्चा में या किसी के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया वो देते हैं तो बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप से, ये बड़ी ही जो है तंज के रूप में वो दूसरों को रिस्पॉन्स करते हैं। जीवन में अक्सर ज्यादातर वो अवसाद में या परेशान या किसी तरीके के चिड़चिड़े रूप में वो रहते हैं, बिना कभी कभी वो क्रोध में ना रहते हुए भी जो है वो इसी तरह का भाव प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ज्यादातर वो अवसाद रहेंगे या किसी तरीके का उनके अंदर चिड़चिड़ापन पाया जाता है। हमेशा जो है वो जो भी समस्याएं हैं या जो भी परिस्थितियां हैं उसका निगेटिव या उसका जो नकारात्मक रूप है उसको वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उसमें अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई अगर सकारात्मकता है उसको वो नजरअंदाज करते हुए वो नकारात्मक की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और छोटे छोटे जो है वो नकारात्मक कमेंट्स कह सकते हैं या नकारात्मक प्रतिक्रिया वो प्रदर्शित करते हैं। हमेशा ज्यादातर वो अपने जीवन में ज्यादातर वो अवसाद में ही रहते हैं। बहुत से लोगों को वो कभी भी जो है किसी को ना नहीं बोलते, हमेशा लोगों को हाँ ही बोलते हैं। बट उससे और अगर आपने यहाँ बहुत ज्यादा हाँ कहने का मतलब है कि गुस्सा दिखाना आपके लिए मुसीबत। कमजोर सीमाओं को, विशेषताओं को एंड्रिया ब्रांड ने हमें एक सूची में भी दी है जो कि कमजोर सीमाएं कैसी होती हैं। उसके लिए कमजोर सीमाओं में वो अपने व्यक्तिगत जो भी उनका व्यक्तिगत स्पेस है या जो उनका व्यक्तिगत स्थान है उसको सुरक्षित नहीं करते, बहुत ज्यादा चीजों का वो खुलासा रखते हैं, दूसरों को परेशानियों में फंसाने की कोशिश रहती है। वो हर चीज को दूसरों पे थोप देने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए अपनी जरूरतों की उपेक्षा करते हैं। किसी के साथ जो है अगर मान लीजिए वो उनके साथ अगर दुर्व्यवहार भी होता है तो उसको वो बर्दाश्त करने की या उसको सहन करने को ही वो प्राथमिकता देते हैं। और दूसरा ये है कि वो किसी भी धर्म या संप्रदाय में बहुत जल्दी या किसी भी चीज को बहुत आसानी से मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा। विशेषकर जो नकारात्मक चीजें होती हैं उनको वो बहुत आसानी से मान लेते हैं। ये एक कह सकते हैं आप जो ये उनका वो है। इसमें एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि लूसी और केट एक दो लोग थे जो कि एक किताब की दुकान पे काम करते थे। लूसी एक जो है एहसान का जल्दी से जल्दी ध्यान रखने के लिए एक कहती थी संभव। हालांकि केट अपना स्वयं काम करती थी लेकिन कुछ समय उसको लगता था कि वह दोपहर के लिए भोजन करने चली जाती। जब वो वापस आती थी तो केट स्वयं काम कर रही होती और लूसी को मिल जाता था, गुस्सा आ जाता। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग कैसे कहते हैं कि आप मदद कर सकते हैं यदि आप वास्तव में मदद नहीं करते। जैसे इस पूरी उदाहरण में उन्होंने समझाया कि लूसी ने अपने दोपहर के भोजन के जाने से पहले उसने जो है एक किसी काम के लिए किसी चीज के ध्यान रखने के लिए जो है उसने केंट से क्या कहा, लेकिन जो है केंट अपना स्वयं काम करती थी लेकिन उसको कुछ समय लग गया। फिर वो दोपहर के भोजन चली गई। जो वापस आती है तो केंट स्वयं काम कर रही है। जो तो लूसी को भी गुस्सा आता है, उसको लगता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप मदद कर सकते हैं लेकिन आप वास्तव में नहीं करते। मुझे नहीं पता था कि आप तो उसमें ये कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि आपके लिए इतना जरूरी था। तो उसने कहा कि नहीं, ये मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ये काम यथाशीघ्र होना है, इसीलिए मैंने आपसे ये कहा मुझे लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी कुछ और चीजें खत्म करनी थी, इसलिए मैं इसको अभी कर देता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना क्रोधित क्यों हैं। केंट ने बिना किसी कोई समय सीमा पूछे बिना अपने एजेंडा पे विचार किए बिना हाँ कहा और ना से बचने के लिए हमेशा वो हाँ कहती थी। फिर उसे ऐसा करने में देरी और होती थी, उसे पता ही नहीं लगता थी ये काम कितना जरूरी है, जबकि वास्तव में जानती थी जल्द से जल्द होगा और इसे आसानी से किया जाना।
पता चला कि वो कितना महत्वपूर्ण था। वो आसानी से पता लगा सकती थी कि वह उसे प्रतिबंधित कर सकती थी या कह सकती थी, या वो नहीं कह सकती। इससे हमें ये लगता है कि अगर हमें अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसमें अगर हम किसी कार्य को समय पूर्वक नहीं कर सकते, समय के साथ नहीं कर सकते, तो हमको उसको मना कर देना चाहिए, ताकि वो दूसरा व्यक्ति अपनी जो प्राथमिकताओं के अनुसार उस काम को कर सके। हमारे कम्युनिकेशन में विभिन्न शैलियों में अंतर जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जिससे हम दूसरों के साथ अपने कम्युनिकेशन के लिए जागरूक हो सके। इसको लेखक ने चार तरीके से उसने एक चार्ट के थ्रू समझाया है, जिसमें पैसिव एक जो है, जिसमें निष्क्रिय भावना, निष्क्रिय प्रकार के जो भावना है, उसको उन्होंने बताया है कि ये भावनात्मक रूप से थोड़ा बेईमान होते हैं, ये अप्रत्यक्ष होते हैं, ये किसी भी चीज को सीधे सीधे नहीं कहते, ठीक? और ये चीजों को बाधा डालने के लिए तथा अपने आत्म इनकार करने के लिए करते थे, दूसरों को दोषारोपण करने के लिए या क्षमा प्रार्थी करने के लिए होते हैं। दूसरे आक्रामक निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं, उनका भावनात्मक रूप से वह भी बेईमान होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कि निष्क्रिय लोग होते हैं, और पहले वो स्वयं को सबसे पहले नकारते हैं, बाद में दूसरों की कीमत पे स्वयं को बढ़ाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा था। तीसरा जो है वो है आक्रामक निश्चयात्मक लोग। ये अनुचित रूप से ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजक, हमला करने या कह सकते हैं या किसी चीज को नियंत्रण करने वाले और दूसरों की कीमत में अपने को बढ़ाने वाले होंगे। चौथा एवं जो सबसे उत्तम, जिसके लिए पूरी पुस्तिका में, पूरे किताब में एंजेला ब्रांड जी ने बताया है, उसमें ये कहा है उसने कि जो लोग थोड़ा दृढ़ात्मक या साहसपूर्ण, उचित रूप से ईमानदार होते हैं, ठीक है, आत्मवर्धक होते हैं, ठीक है। दूसरा अभिव्यंजक, आत्मविश्वासी, और तथा वो अपनी इनमें वो दूसरों की भावनाओं के लिए भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जाते हैं, ठीक है। वो अपने जो भी कथन में करते में दूसरों की भावनाओं को भी इन्वॉल्व करते हैं या उनको भी शामिल रखते हैं। ये चार प्रकार के कह सकते हैं आप प्रकार जो है, जो कि एंड्रिया ब्रांड जी ने इस अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया है। उन्होंने इस जो निष्क्रिय आक्रामकता को उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय भी बताए हैं, जिसमें पहला है कि हमें अपने जो भी क्रोध है उसको पहचानना चाहिए, हमें अपने भावनाओं, अपने विचारों में तारतम्य बैठाना चाहिए, हमें अपनी एक सीमा निर्धारित करनी चाहिए, जिससे जो है हम अपनी चीजों को दरकिनार करके दूसरों की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व ना कर सके। हमें कोई भी जो भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो दृढ़तापूर्वक करना चाहिए, उसको दृढ़तापूर्वक कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को उस चीज के बारे में उसका पूर्ण ज्ञान रहे कि हाँ, ये व्यक्ति हमें कहाँ तक जो है उसके अंदर जो है वो एक दोनों पक्षों को एक प्रकार से दोनों पक्षों में एक प्रकार से एक कम्युनिकेशन बना रहे। दूसरा, अपने जो भी विवाद है या जो भी हमारे अंदर विवाद है, उनको रिफ्रेम करके, उनको अगले ढंग से उसको करके, ताकि उनको जो है सॉल्व किया जा सके, या उनको ये किया जा सके कि वो मतलब उनको खत्म किया जा सके, इसलिए उनको रिफ्रेम करना चाहिए और बुद्धिमत्ता के साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। और बेहतर है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करके और बेहतर जो है रिजल्ट्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैंने जो है यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी पुस्तकें हैं होंगी,
इस टॉपिक पे, जिसमें ये निष्क्रिय आक्रामकता के बारे में, जैसे जटिल विषयों के बारे में, कि इसको कैसे निपटें या कैसे इसको संभालें। लेकिन इस इंडिया ब्रांड जी ने जो इसको चुनने के लिए जिस तरीके से प्रेरित किया है, वह जो है बड़ा ही, उन्होंने उसमें इस विषय में सबसे ज्यादा उन्होंने निष्क्रिय आक्रामकता उपयोग करने वाले व्यक्तियों के प्रति दयालु या एक दयालु या जोरदार दृष्टिकोण रखा है। यह इस पूरी पुस्तक का या जो भी इनके 8 सूत्र हैं, उसमें इन्होंने सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने वो एक दयालुपन से, या कह लीजिए, या एक इस दृष्टिकोण को रखा है किस तरीके से हम अपने अंदर ये निष्क्रिय आक्रामकता को खत्म कर सकते। धन्यवाद। सर आप म्यूट। बिफोर एनीवन सर आप म्यूट हैं। नहीं, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही जी। वो थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा है आज मेरा, तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि बिफोर एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन और वांट टू ऐड समथिंग, इट्स ओपन टू ऑल द 3 स्पीकर्स इफ दे वांट टू रियली ऐड समथिंग। स्पेशली गोमती जी, आपने ये विषय तो कुछ और 2-3 मिनट में कहना चाहती हो जो रह गया हो तो आप कह सकती हैं। उसके बाद मंच ओपन है, कोई भी उस पर बोल सकता है। यस गोमती जी। He also says one tip as to how we can communicate assertively, like how to avoid being passively aggressive. She has taken the example of X, Y, and Z, where X is the behavior of the other person, Y is the situation that provokes the other person to behave in a particular way. What is the situation? And Z is the way I feel, the way we feel. So if we can address that, or if we can communicate, for example, simple example, she says, for example, when you did not say, she's talking to her husband, she says, when you did not say hi, when my mom entered the room, I felt very angry with you. So his behavior, the situation, and then her feeling. So if we can communicate that way, what happens is next time he will not forget to say hi to her mom when he enters the room. So the course correction also happens when we can communicate, taking into consideration the X, Y, and the Z aspect of communicating assertively. One more point I wanted to say. Sure, please. That's it. That was the point. Nirmala ji, do you want to add anything? In which language? You can speak in English now. Actually, I was sharing with Gomathi ji in the morning. See, we do not realize what we are doing. See, that is the crux of the matter. Because I was in the 9th standard, and there was a new girl who joined the school. She was put in my class, and the class teacher asked her to sit next to me. Okay, so I was talking with her occasionally, like in the breaks and all. Then she will give somewhat odd replies, like there won't be any relation to the questions I asked. So I thought, शायद उसको सुनने को कम आ रहा है. She is not hearing properly what I'm saying. She has some issue. But after 2-3 months, we became good friends. So at that time, she told me, Nirmala, you speak too fast. Actually, in the beginning, I did not understand you at all. Now I'm able to understand almost. Then I realized problem was with me. It was not her issue. But I thought the problem was with her. So, like with passive aggressiveness, until I read this summary, I did not know that I also do that on many occasions. So that realization, self-realization is essential to correct ourselves and go forward. So that's what I learned. That is a learning experience for me. And thank you, Gomathi, for this. Thank you. It was nice to have you. और तमिल हमें बड़े कम समझ में आ रही हो, लेकिन एक्सप्रेशन सबके हम सब कुछ समझ पा रहे थे.
मिश्रा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या हाँ, ये बहुत मतलब आज का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छा, और हम लोग जो अपनी डे टू डे लाइफ में इन सारी चीजों से गुजरते हैं, हम कभी कभी हमको लगता है कि हम आक्रामक हो गए, कभी कभी लगता है कि नहीं हम लोग थोड़ा सा असर्टिव हो गए। ठीक है, बहुत सारी चीजों में ये एक ऐसा मतलब देखने का एक नजरिया बना देता है कि हाँ, अब हम लोग जब भी कोई कम्युनिकेशन या किसी प्रकार का कोई भी इस तरीके की कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें हम इस चीज को एक बैक ऑफ माइंड एक एनालाइज करेंगे कि हाँ, whether we are assertive in this issue or we are passive in this issue or somewhere aggressive in this issue. So it is a very मतलब it's a very practical topic you have taken. So मतलब उसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें इसमें धीमे धीमे जैसे ही हम इस पे वर्क करना शुरू करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, कब हमें क्या चीज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई तरल जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। ये गोमती जी का सब्जेक्ट है और वो उसकी बधाई की पात्र हैं, और दैट जी इज जी द beautiful way in which you always present the subject in such a simplicity that you have made everyone, गोमती जी, to self analyze yourself. मतलब मेरे ख्याल से सारे लोग आज अपने आप की हर बात के ऊपर रुकेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि मैं क्या हूँ उस 4 प्रकार में से। तो वो एक जी। बहुत अच्छी बात है जो आपने सोच की और हमें कर दिया। हाँ जी, और कोई कहना चाहता हो? मैं तो जो लोग पटल पे हैं उनको सामने ला रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं अरमाइटी जी या विमल जी? It's been explained very well. Thank you. थैंक यू। यस विमल जी, गो अहेड। Gomti, I want to ask a question. So, Yes. if there is a person who is by nature passive aggressive, then your analogy, which you said last, that x plus y equal to z, that type of thing, can we tell them, or how do you deal with another person who is passive aggressive? Yeah, very good question, Vimal. Actually, passive aggressiveness is not by nature, it is an acquired style of communication wherein through the past from childhood, that is what Andrea Brandt says that. So if we find that the other person is also passively aggressive, we can assert, or we can in fact find out. So when there is a why situation, why is the situation we said, right? So if why is the situation, we can find out what could be the reason behind their behavior in that particular situation. Like you are asking whether it is how it works for another person who is passively aggressive at the same time, right? So we can channelize their being passively aggressive into being assertive. We can help them to become assertive in the sense by taking responsibility for our feelings and not putting the blame on the other person. Sometimes, being passively aggressive, it can be a simple thing as giving us a silent treatment. That also can become a passively aggressive person. We know so many people who isolate themselves, right? Who withdraw themselves. That also is a passive aggressiveness only. How do we deal with that? Sometimes, we have to just let go and just accept them the way they are, because they are deeper into their own issues, probably not able to overcome. But if we are hurt or we are affected, then we take some action to find out as to why this is happening with them, or what could be the what reason. is the action? Yeah, that is my question. What is the action to take? Yeah, so we can actually share with them what we feel. Sharing our feeling, expressing our feeling is of paramount importance, because unless that anger which we feel by the other person's being passively aggressive, anger needs to be expressed. But how do we express? Taking responsibility for our feeling. So I feel bad that you are not talking to me, or I feel bad that you have not, you have got angry with me probably, or I feel bad that you are not talking with me for so many days. So I miss you a lot. So when we take that responsibility, so we lead the other person into thinking as to what could you be going through. Otherwise, the person being passively aggressive, most of the time it is unintentional, and probably they are not aware that they are being passively aggressive also. Because at that point of time, they may be solving their problem, but it may be inside, it may be deep inside the subconscious mind, which they may not be aware.
in retortion, they say that, they find fault in you, and they say that, you are feeling bad because there's something wrong with you. Yeah, absolutely possible. And similarly, we may also end up feeling that the problem is, usually it is like that, because when there are two people, one conflict happening between two people, the party A wants to prove a point against party B and vice versa. Whereas if the conflict has to be resolved, it is like a Venn diagram, Vinmal. So you draw the Venn diagram where you join, and that is where the joining is where the conflict needs to be resolved. So here, when one party is vehemently adamant that I am right and you are wrong, we are heading nowhere. How are we going to come to a conversation, come to an agreement that both of us have some issues? Agreeing to disagree also can be a good, reply that you can give to your friend. So you can justify your case to your friend when you meet her and find her passively aggressive. You can justify that probably even, I have been that way at times. So we are all in the same boat, and how we can resolve this. If we are going to try to blame each other because of you, we are not heading anywhere. So, but it is very important that we take charge of our feelings, women, and do not blame other person for our feeling, for how we feel. So that is half the battle won. So when you are missing a person, so why is it that you are, you want to resolve a conflict? Because probably in a relationship, we are missing the person badly. And we want this relationship to happen, but it is not happening. But we find that the other person has withdrawn completely, or the other person has isolated, and they are giving us a silent treatment. So what do we do in that scenario? Right? We can only say sorry. We can start by saying sorry for the way, you feel, or for the way that I have acted probably on earlier occasions. We can take that responsibility. Feeling sorry not for a mistake, but feeling sorry that the relationship is not going the way it should be going. So that can bring the other person, we can bring the other person to mellow down a bit and probably start a conversation all over again. Thank you. Yeah. Nirmala ji, you wanted to say something, you raised hand. Yeah. I just want to add something to what Gomathi said. I feel a person is just going by my own experience of self and my experience with others in my family and friends. I don't think a person is just passive aggressive or assertive. It's not a label applicable at all times. Mostly we are all complex people. We are assertive at times, we are passive aggressive at times, we are passive at times. So we can find the what Vimal was asking. It was a very good question. We can, depending on the mood of the other person, we can react to them. When they are passive, we can advise them. When they are passive aggressive, you try just to say sorry and and take a seat back. And when you are assertive, of course, then at that time they are also in the problem solving mode. So at that time we can have a real discussion. That's what I want to say. Thank you. Yes, Shinde ji. Oh, Sir. Yeah. Thank you. Very Yes, nice, Gomathi. Very nicely we have dealt with that book, and especially which has taken us to the comparison with the animals. And you began with those animals connected with our purpose of goal, those Yes. who know the purpose of goal, and those who do not know the purpose of life. So it is very important discussion you have carried on this session. I liked it very much, because everything that we have within our subconscious mind has come from the animal kingdom. We are the part of that animal kingdom. And whatever reactions are going on, they are going on in the subconscious level. And when they come to surface, we classify them as the passive or assertive or whatever it is. So at the subconscious level,
if we are aware, and it is said, if we experience in our life with awareness of our own relationship with everything, with joy, sorrow, pain, pleasure, then the human soul comes to a knowledge of itself. And when it comes to the knowledge of itself, it begins to learn the laws of life. That is the laws of understanding. Understanding is the only law. And he starts building the relationship. So life is relationship. Understanding the facts is essential, and that comes through our study, through our learning process. And when coming deeply, when we can understand fully, understanding itself is enlightenment. And the consciousness that is completely open to a person to whom he has to understand, then whether he can understand in sound, color, thought, emotions, anything, he gets unified, he gets integrated with that form, with that person. And such observing consciousness, aware consciousness becomes charged with the quality pervading that form. We become one with that person and we understand. And that makes much difference. Don't know how they understood it, but they understand it. When we really try to tune with them. So in this sense, I think it is life is relationship, and you have explained very nicely, very, what I can say, it makes people to think deeply. So all these, whatever you have given, they are thought-provoking for the young people to start with the life. All this is needed as the ethical conduct, or what we say, what to do and what not to do and how to understand. All this is very nicely explained in that book. Thank you for your exposition on this fact. Gomathi very nicely explained, and all others translated it also, even if I don't understand the Nirmalas. But yeah, whole program is very nice, Taralji. Nice, thank you, thank you. Thank you everyone. हर्षवर्धन जी, आप थे अभी, कहीं चले गए? नहीं, उनका वीडियो बंद हो गया. Anyway, so we come to the end. If there is no one to ask a question or something, our time is up. So I will request Atul bhai to go towards the ending ceremony. Atul ji, Atul bhai, I think Yes. he's frozen. અર્ચનાબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्यात्म सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् थैंक यू सो मच और सभी को बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, आप बीच में चले गए थे तो हम संपर्क that it happens that